सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ करने के लिए देयर आर सर्टेन एम्पिरिकल इक्वेशंस, और वो हर एक सब जोन के लिए वो एम्पिरिकल इक्वेशन अलग अलग होगा। तो अभी जो एग्जाम्पल लेके मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कावेरी सब जोन का है। तो कावेरी सब जोन का आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये सारे एम्पिरिकल इक्वेशन है। इस एम्पिरिकल इक्वेशन में जो वैल्यूज डार्क ब्लू कलर में दिख रही हैं वही वैल्यू सिर्फ आपको भरनी है, और उसी से आपको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के डिफरेंट पैरामीटर्स निकल जाएंगे, और उन डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट पॉइंट्स पे से पास करता हुआ आपको एक कर्व खींचना होगा जो उस बेसिन के लिए या आपके रिलेवेंट लोकेशन के लिए सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। अब आपने जो कर्व खींचा है ये 4 पॉइंट को लेके W50, W75, WR50 एंड WR75 with a base width TB and the maximum discharge QP, ये जो पूरा जो सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ जो आपके साथ बन रहा है, whether this hydrograph is representing your correct सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ आपका सही बना या नहीं को चेक करने के लिए ये एक फॉर्म मेथड है, एक एम्पिरिकल मेथड है, जिसमें ए एरिया पे चूंकि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ तो टोटल जो डिस्चार्ज आएगा वो इस वैल्यू पे आ जाएगा। सिमिलरली जो डायरेक्ट रन ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ से निकलेगा उसमें उसके ऑर्डिनेट्स को उसके बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेस 1 आवर है इसीलिए उसको 60 into 60 सेकेंड्स में कर दिया गया। तो सारे ऑर्डिनेट्स जो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो टोटल डिस्चार्ज दे देगा, और दोनों फिगर्स को मैच कर लेना होगा। अगर वो दोनों फिगर के मैच से आपका मैच कर रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये दिखाएगा कि सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो शेप आपने दिया है वो शेप करेक्ट है। अगर वो शेप सही नहीं आता है या दोनों वैल्यू सही नहीं आती हैं तो फॉलिंग लिम्ब की तरफ जो WR75 के बाद जो लोकेशन पड़ता है उस लोकेशन को के अंत वाले लोकेशन को आगे पीछे करके आपको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के एरिया को A divided by 0.36, this will become 2.78 A, इसके बराबर लाना है, और दोनों बराबर होने के बाद आपका सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ करेक्ट माना जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब जैसे हम लोगों ने डिजाइन स्टॉर्म निकालना होगा, डिजाइन स्टॉर्म के लिए हमको Q50 निकालना है। तो डिजाइन स्टॉर्म के लिए TP हम लोग पहले निकाल चुके हैं, एज पर आवर जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उससे TP निकल जाता है, जिसको 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिजाइन स्टॉर्म आता है। अब पूछेंगे 1.1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हर एक CWC रिपोर्ट में ये फैक्टर दिया हुआ है। उस जिस सब जोन में जाएंगे उस सब जोन के रिपोर्ट में TP को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा वो देखना होगा, और मोस्टली ये वैल्यू 1.1 रहती है। अब जब हमको डिजाइन स्टॉर्म मिल गया तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था कि इस डिजाइन स्टॉर्म पीरियड के लिए हमको
R50 देखना है, मतलब 50 ईयर रेनफॉल फॉर दिस डिजाइन स्टॉर्म पीरियड। वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 50 ईयर 24 आवर्स रेनफॉल, जो मैप हमारे पास डिफरेंट मैप्स हैं, उससे हम 50 ईयर 24 आवर्स रेनफॉल डेटा निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? कोई पार्टिसिपेंट बताइए, कैसे मिलेगा हमको 50 ईयर 24 आवर रेनफॉल डेटा? कोई पार्टिसिपेंट बताइए। From where we will get? ग्राफ रेशियो से निकालेंगे। हाँ, नहीं, ग्राफ से नहीं निकालेंगे हम लोग, उसको निकालेंगे। अच्छा, ये आपको छोटा वाला दिख रहा है। चलिए, आपको 50 ईयर रेनफॉल डेटा निकालने के लिए आपको देखना होगा जो CWC रिपोर्ट्स में मैप्स निकला था। जैसे मैंने आपको ऑल इंडिया मैप दिखाया था, उसी तरह हर एक रिपोर्ट के लिए अलग अलग मैप दिया हुआ होगा, जिसमें 24 आवर्स रेनफॉल भी होगा, किसी में 1 आवर रेनफॉल होगा, और 1 आवर से 24 आवर्स में कैसे चेंज करेंगे ये डेटा दिया हुआ होगा, एक रेशियो दिया होगा। तो आपको उस मैप से निकाल के 50 ईयर रेनफॉल डेटा निकालना होगा। और जब वो 50 ईयर रेनफॉल डेटा आप निकाल लेंगे तो फिर एक रेशियो, एक ग्राफ मिलेगा, जिस ग्राफ पे, जो ग्राफ आपको मैंने एक लिखवाया था, इसमें भी देखिए एक्स ऑर्डिनेट पे आपका जो स्टॉर्म ड्यूरेशन लिखा हुआ है, जो आपका डिजाइन स्टॉर्म ड्यूरेशन है, वो एक्स एक्सिस पे है। और वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे 10 ईयर T आवर रेनफॉल एंड 10 ईयर 24 आवर रेनफॉल। यहाँ पे 10 ईयर क्यों लिखा है? हम तो सब जगह R50 बोल रहे हैं, तो R50 उसमें ये दिया है कि अगर R50 का भी रेशियो सेम ही रह जाएगा, मतलब उनका जो 10 ईयर का रेनफॉल है वो 50 ईयर के रेनफॉल का रेशियो भी सेम रह जाएगा। इसीलिए आपको यही चार्ट, इसी चार्ट को आपको यूज करना है। तो अब जब हम 50 ईयर 10 ईयर 24 आवर्स रेनफॉल की जगह पे R50 24 आवर रेनफॉल हम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 50 ईयर 1 आवर रेनफॉल आ जाएगा। और रेशियो चूंकि सेम है, तो वो रेशियो से 24 आवर रेनफॉल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 50 ईयर 1 आवर रेनफॉल निकल जाएगा। एनी कंफ्यूजन? सब लोग समझ पाए या कोई दिक्कत है? पार्टिसिपेंट्स बताइए, कल भी हम लोगों ने यही यूज किया था। तो अब जैसा पहले भी बता चुके थे कि ये जितना रेनफॉल अभी आपने ग्राफ मतलब चार्ट से लिया था या मैप से लिया था, वो पॉइंट रेनफॉल था। लेकिन अब हमको पॉइंट रेनफॉल से इसको एरियल रेनफॉल पे लाना होगा। तो अब पॉइंट रेनफॉल से एरियल रेनफॉल पे लाने के लिए हम लोग एक दूसरा चार्ट यूज करेंगे। इस चार्ट का नाम हुआ, उसमें देखिए ऊपर में लिखा है एरियल रिडक्शन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग पॉइंट रेनफॉल टू एरियल रेनफॉल। जो हमारा RBF 16 रिपोर्ट था, उसमें एक सिंपल सा टेबल दिया हुआ था। उस टेबल में भी स्टॉर्म ड्यूरेशन था और एरिया था, बट दैट टेबल वाज शॉर्ट, क्योंकि वहां पे एरिया हमें सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर तक था। और हम लोगों ने ये भी माना था कि स्टॉर्म ड्यूरेशन भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। दैट इज व्हाई दैट टेबल वाज शॉर्ट। लेकिन जब हम बड़े एरिया और बड़े कैचमेंट को करते हैं,
तो उसमें स्टॉर्म ड्यूरेशन 24 आवर्स तक का रखा गया है। अगर 24 आवर्स से ज्यादा का भी स्टॉर्म ड्यूरेशन हमको डिजाइन स्टॉर्म मिलता है तो हम उसको 24 आवर्स के लगभग ही मानेंगे। और इस चार्ट से हम लोग निकालेंगे। तो अभी अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास अगर 3 आवर्स ड्यूरेशन का रेनफॉल है और मेरा एरिया 67 स्क्वायर किलोमीटर है, तो आपको इस चार्ट से ये दिखेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ ये 1 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर हुआ है तो उससे इतना डिस्चार्ज निकलेगा। अब पहले आवर में कितना रेनफॉल हुआ है? R1 हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर में ये निकला है, तो R1 सेंटीमीटर से कितना निकलेगा? 1 मल्टीप्लाइड R1 हो जाएगा। अब दूसरे आवर में कितना निकला है? R2 हुआ है, लेकिन अब ये R2 जो है वो दूसरे आवर से शुरू हुआ है, मतलब ये Q0 R2 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये रेन तो पहले घंटा का जो खत्म हुआ रेन तब तो दूसरे घंटे का शुरू हुआ, इसीलिए ये 1 आवर डाउन शिफ्ट हो गया, तो ये Q0 R2 यहाँ लिखा रहा है। ये समझे? ये पहले घंटे का जो रेन था ये तो फर्स्ट आवर में खत्म हुआ, तो ये पहले मल्टीप्लाई हो गया। जब सेकंड आवर रेन शुरू हुआ तो उसका तो सेकंड आवर रेन के लिए फर्स्ट घंटा तो ये है ना। एक अमरावती नारकेल लाइन का था, ये नागपुर डिवीजन में न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए था। ओके, so these are the cells where you have to input, you have to fill the input. So this was the this latitude and longitude के हिसाब से this is falling in the 3 of area. तो आपको जहाँ ब्रिज बनाना है that location you have to collect the latitude longitude उस location का क्या है। जैसे in this example the latitude was 78 degree 26 minute 52 second and then longitude was 21 degree. So that was falling in the 3 of area. Okay, so then you have to refer the report of the लोअर गोदावरी 3 ऑफ जोन के लिए आपको रिपोर्ट को रेफर करना है और उस रिपोर्ट के हिसाब से देन these are the constant and these are the formula for working out the coordinate for the unit hydrograph। जो बताया था empirical formula जो unit hydrograph के जो है that depend on the what report you are referring, किस पर्टिकुलर जोन की हाइड्रोमेट्रिकल जोन की आप रेफर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सो फॉर द 3 ऑफ जोन these are the constant। कावेरी में आपने देखा था some constant are different but it will depend on the L, LC and square root S only। but इसके जो prefix हैं और जो power है that is the different is for the different all the different zones are there having the different values। so आप अपने that is depending on the your hydrometrical zone you can modify this formula at the for the first sense, then you can use that Excel sheet for the all the bridges। okay, so then depending on that hydrometrical zone you have to just modify it। then this is the फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द कैचमेंट एरिया। जो सर ने बताया कि कैचमेंट एरिया का पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट स्ट्रीम का कोर्स निकालना पड़ेगा कितना किलोमीटर लेंथ है, देन इसके बाद में आपको उसको लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम फ्रॉम द सीजी से निकालना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर द फिजिकल पैरामीटर्स दैट इज टू बी इनपुट इज टू बी गिवन इन दिस एक्सेल शीट एंड द नेचर ऑफ द सॉइल व्हाट एवर द सॉइल इज देयर। ओके, एंड दिस इज द जो लाइट येलो कलर में देन अगेन द एवरेज बेड लेवल आपको फीड करना पड़ेगा। OHFL व्हाटएवर द observations field observation has been taken at the site that is to be recorded। अगर आप डबलिंग का काम कर रहे हो then the observed HFL is the what has been marked in the adjoining bridge। न्यू लाइन में बना रहे हो then you have to collect the details from the site investigation। आपको पता करना पड़ेगा कि हाईएस्ट कितने लेवल तक पानी गया हो that is to be recorded there। and then proposed bottom level वगैरह that will be calculated based on our calculation that isn't required। then equated slope आपको निकालना है। सर ने जो बताया equated slope जो आपकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम में आप equated slope कैसे निकालेंगे, तो दिस इज द टेबल फॉर वर्किंग आउट द equated slope that is giving the value of S। तो एक बार आपकी S वैल्यू निकाल लिया आपने, then you can just then you can modify then आप
आपकी दैट विल पिक अप द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम का वैल्यू कितना आपके पर्टिकुलर सेल से ले लेगा. दिस इज अ फार्मूला, इनबिल्ट फार्मूला इज देयर. देन इक्वेटेड स्लिप को वहां से पिकअप कर लेगा वैल्यूज को. देन दिस इज द टू कैलकुलेट द फर्स्ट फार्मूला. दिस हैज बीन कैलकुलेटेड. देन इसके बाद में आप ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर. So these are the values for fixing the 7 coordinates 1 2 3 4 5 6 केवल के कोऑर्डिनेट को जो बनाने के लिए आपका these are the values of the W50 W75. Then you can work out how the coordinate is to be 0 0 by 0. It will start from the 0 0. Okay. So first coordinate is 0 0. Second coordinate आपका क्या है W50 by. So this is at the highest peak जो आपका आ रहा है टाइम का. ठीक है. This is a TM minus TM क्या है आपका? TM is the time from the start to the peak. This is the highest peak का टाइम है. TM is the time from the start of the rise to the peak. Okay. So this is a TM. So आपका W जो this coordinate will be the TM minus WR50 आपको करना पड़ेगा. So you will get the x coordinate for this point and y coordinate कितना है? Peak का 50% discharge. तो peak discharge आपका कितना आया था? 3.044. तो automatic it will take 50% आपको. He will pick up the values from this tables जो भी आपने बनाया हुआ कैलकुलेट किया हुआ उसको इनबिल्ट फार्मूला. So he will pick up the values and this will give the x coordinate and the y coordinate for this point. Again this is the 75%. So this y coordinate is the 75% of the peak. And this is the TM minus WR75. So this formula is TM minus W75 और इसका वैल्यू कितना ले रहा है? This is the cell of this R23. This is the value of R23. अगर आप इस पे देखेंगे, so this is the formula R23 minus WR75. So this is giving the value of this cell. Okay, so आपका एक बार ये fix हो गया, then it will automatically draw the graph. ठीक है, this 7 point आपके जो mark कर देगा इस पे. It will not draw the graph, it will mark all these 7 points automatically. ठीक है. Then you have to draw the hydrograph. अब आपको hydrograph draw करना है आपके पास जब 7 ordinates हैं. And this is the starting point is 0 and the last point आपका कितना था इसमें? Last point is coming to the, this is the TV is 10.5. So this is the last point. Okay, so आपने उसके हिसाब से आपने इसको hourly distribute कर लिया 0 से लेके 10 and the 11 roughly. 10.5 हम नहीं लेंगे तो उसको 11 में distribute कर दिया. Then these are the ordinates. 0 पे आपको पता है मेरे पे 0 पे ordinate 0 रहेगा. Then this is the ordinate of 1.96. Okay, x coordinate is 1.96. So generally it is near to the 2. और 1.96 पे मेरा वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 29. So roughly आपने we have taken the 30. So दो एक आपकी ये fixed coordinate हो गए. Here we can't play with the ordinates. Then again is a 3.004. This is the ordinate. 3 point पे आपका this is coming is a 58. So we have taken 59. Then next is the 3.9. All these blue one जो आपने मार्क किए these are the fixed ordinate. These are the fixed point based on the CWC report. जो 7 ordinates हम निकालते हैं hydrograph के वो fixed ordinate होगा. उससे आपको best fit curve draw करना है. Okay, so the next is the 3.903. So we have taken the 4. And 4 के बाद में यहाँ पे वैल्यू इसकी है 3.43. So roughly we have taken the 43.66 to 43. क्योंकि this is slightly higher than the 4 और is decreasing में है, so we can take the lower values. Then 4.669. So roughly 5 पे आएगा. That will come in between the 4 and 5. And value यहाँ पे आपकी 29 आ रही, so we can take it lower than the. एक roughly आप निकाल सकते हो या इसको depending on the curve आप इसको adjust कर सकते हो. Then is the last value is the 10 से लेके 0.9. So these are the, which is the highlighted one is the fixed coordinate and you can play with the which is the white cell is there. So if we change the value, आपको पता है कि this sum of the ordinate should be equal to the theoretical value. आपको theoretical value आपने निकाला है, that is the theoretical value आपकी कैसे आएगी? Theoretical value will be the 1 centimeter rainfall over the complete area. Okay, and that value, estimated value is coming आपकी 186 point. This is your theoretical discharge. ठीक है, theoretical discharge आपने जो निकाला है 57.
This is the summation of your ordinates. It should be equal to the 186 point. आपका जो theoretical volume है, that is coming 186.26. 1 centimeter rainfall over the complete area. That is reflecting into 186.26, and summation of your ordinate should be equal to the 186.5. Suppose मैंने यहाँ पे ordinate इसको fix नहीं किया अभी. I am just deleting every ordinate where I can play it. Okay, so this is 150. Now we have to fix the ordinate, and that should be the smooth curve. Suppose I have taken the 9 here, then 23 के बाद में आपको लगता है that is the filing 21 ले लिया, then इसके बाद में 21 is quite steep is there, so it is maybe you can say 15 ले लिया मैंने, then you can take it 6 ले लिया, then आपने 3 2 या इसको 1 ले लिया, and then 11 पे 0 है. So that is not looking smooth also, and the value is coming more than the 189.5. So we will try to smoothen it out. Earlier we have taken here the 10th मेरा, so it is slightly smooth here. Now this is here at the 6 में we have taken 15. Okay, so it should be slightly on the lower side. That's why then it will convert it to the smooth curve. So we will take it 5 ले लिया मैंने suppose. Maybe slightly, maybe lower than this also. 6 पे 15 लिया था. Okay, 6 पे 15 लिया था, तो 15 से कम चाहिए आपको. So we have taken, I suppose 12 लिया. 12. Then it looks quite smooth, है ना? Only problem is there 3. So इसको हम 0.5 भी ले सकते हैं. So it looks like this, and it may be 2 here, and it may be the 1 here. Okay. So it is roughly 180.5, and our target was 186.6. So we can increase it 6 कर लेते हैं इसको. So in this way we can draw the smooth curve. Maybe the best fitted curve may be drawn here. Okay. This was the 13. Okay. So there permutation combination you have to do it for to draw the best fit unit hydrograph curve. Once it has been plotted, this unit hydrograph, next target आपका होता है कि rainfall निकालना. TD सर ने जैसे बताया था 1.1 times of the TP. So TP आपने यहाँ पे calculate किया है. So it will automatically pick up the value 1.1 into R9. R9 आपका कहाँ पर था? This is R9, 2.25 है. So it is coming roughly 3 hours. So it is coming 2.789. So you can take it the 3 hours. 3 hours के बाद में आपको टेबल से पिकअप करना है वैल्यू. 3 hours के लिए आपका कन्वर्शन फैक्टर क्या होगा? देन आप यू कैन एरिया को जो इंटरपोलेट करना है बाय सिलेक्टिंग द डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल्स, यू कैन इंटरपोलेट इट. देन आपने एरियल रेनफॉल निकाला कि 8 hours के लिए एरियल रेनफॉल, नॉट 8 hours, दैट इज फॉर द 3 hours. ओके, 3 hours का आपका रेनफॉल कितना होगा? देन यू कैन 3 hours का आपने रेनफॉल निकाली, दिस इज द टोटल एरियल रेनफॉल. And then it is to be distributed into the duration. 3 घंटे आपको distribute करना है. So सर ने आपको बताया distribution कैसे करना है. So these values to be taken, whatever that this light sky color, blue color is there, that is to be, these are the values to be, the appropriate values to be taken from the, by referring to the CWC report. ठीक है. So आपके 3 hours का distribution के लिए, for 3 hours distribution you have to take this cumulative percentage वाला एक जो table दिखाया था कि first hour में कितना होगा, second में कितना होगा, third में कितना होगा. That is giving the cumulative rainfall in the first hour, first 2 hours, first 3 hours. Okay. Then आपके इसके आने के बाद में this is the hourly storm, और आपका इसमें लॉस है 0.2 का, एंड बेस फ्लो इतना हो गया. ठीक है. So then this आपका 3 rainfall is 8.304, 10.007, 10.067. Now this, because of this storm, what will be the hydrograph? So you have to just take the help of the unit hydrograph. Unit hydrograph के ऊपर हम उसको superimpose करेंगे intensity of the rainfall. So this is the intensity of the rainfall which is distributed over 3 hours. उसमें से हमने constant losses minus कर दिए. So this is the effective rainfall. If effective rainfall is less than 0, अगर minus में आ रहा है, 0 आ रहा है, then that is to be neglected. This is the surplus to the base loss. So this is 0.439, 1.503, 8.014.
Now we are interested into the maximum value. Maximum value कब आएगी? The maximum intensity will against to the this is the peak of the hydrograph. The peak of the hydrograph मेरा कितना है? 59. So we have to place this 8.104. It is the summation of the three ordinates. Okay. अगर आप इसको देखें, this is the final hydrograph. It is the summation of the three ordinates. Okay. This is the unit hydrograph, and unit hydrograph में superimpose कर रहे हैं. This unit hydrograph को हमने this is converted into the flood hydrograph. Flood hydrograph में this is the first hour का है, this is second hours का, this is for the third hours, and we are looking for the maximum value. Maximum value के लिए this is the maximum ordinate of the unit hydrograph. Okay, so our intensity, maximum intensity कितना था? 8.104. So if we multiply this ordinate by the 1.53, उससे value 88 आ रही है. 8 point से multiply किया तो 243 आ रही है, और 0.439 से multiply किया तो 4.38 आ रही है. This means that if we place the intensity of the 8.84 in such a way that it will contribute to maximum, so it will come again, it will come in the middle. ठीक है, इसलिए हमने उसको इसके against में put up किया. Then next higher intensity was the 1.503, so that should be come against to the next higher ordinate of the unit hydrograph. So that will be placed against the 43. So 43 के against में place किया हमने, और इसको that will give the order. Okay. So summation of then okay, this was the year. क्योंकि 59 से आपने नीचे गए, this is the maximum intensity. This is starting after 1 hour, so here we are multiplying it by the 59 is this ordinate. I will just correct it. Just a minute, yeah. सर एक क्वेश्चन था सर. या बोलिए. जब हमने Q50 निकाल लिया है तो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ का जरूरत नहीं है. अगर आपको नहीं चाहिए, if you are interested only into that maximum discharge, then it is fine to just to work out it. You can stop the process here. Okay. मेरा मतलब सर फ्लड हाइड्रोग्राफ का ये फिजिकल कंसेप्ट क्या है सर इसका? फ्लड हाइड्रोग्राफ का बेसिकली यू आर वर्किंग आउट द मैक्सिमम डिस्चार्ज. ठीक है. फ्लड हाइड्रोग्राफ में ओनली जनरली बेसिकली जब आप रिवर टर्निंग वर्क करोगे और उसको दैट इज टू वर्क आउट हाउ फास्ट इज टू वाटर इज टू बी डिस्चार्ज, एंड अगर आपको रिवर टर्निंग वर्क करना है और भी इंप्रूवमेंट वाले वर्क करना है, देन इट इज रिक्वायर्ड. इफ यू फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द ब्रिजेस ओनली, कि आपको ओपनिंग उससे फिक्स करना है, देन यू आर इंटरेस्टेड टू द मैक्सिमम डिस्चार्ज Q50 ओनली. वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ओनली. ओके. बट अगर आपको उसके बाद में गाइड बैंड वगैरह बाकी चीजें बना के आपको स्ट्रीमलाइन करना है कि आपको कितने, देन इट इज यू मे बी इंटरेस्टेड टू दिस फ्लड डिस्चार्ज में. अगर आप कोई डैम बना रहे हो तो या उसके आप स्ट्रीम में कोई डैम या कुछ है उस समय, देन इट इज की हाउ फास्ट इट विल बी डिस्चार्ज, कितना पर्टिकुलर टाइम में कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना डिस्चार्ज होगा एक पर्टिकुलर. सपोज इसके डाउन स्ट्रीम में आप कुछ वर्क कर रहे हो, देन आफ्टर 3 आवर्स के बाद में वहां पे क्या रेनफॉल कितना डिस्चार्ज होगा, देन फ्लड डिस्चार्ज चाहिए आपको. ठीक है. Otherwise, if you are deciding the opening and other things only, then only we are interested in the Q50. Then आपने flood discharge अगर आपने इससे superimpose करके निकाल लिया, no need to draw this flood hydrograph. Okay? ठीक है? Yes sir. और दूसरा एक और क्वेश्चन था सर. जी. तो जो सर यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हम ड्रा करते हैं तो इसमें करेक्शन सिर्फ फॉलिंग लिम्ब में ही करेंगे, अपर लिम्ब में नहीं कर सकते? या इसमें जो चीज है कि इसमें जो आपका है, आपने जनरली जो अपने वीडियो में भी देखा हुआ था या इसमें भी देखा, दिस फॉलिंग लिम्ब इज क्वाइट फ्लैट टाइप का है. ठीक है. एंड राइजिंग इज क्वाइट फास्ट. सो एंड इन द ऑल CWC रिपोर्ट इट इज बीन देयर इफ सबमिशन ऑफ योर ऑर्डिनेट, या इसके अंदर जो वॉल्यूम बेसिकली दिस इज व्हाट इज दिस बाय ऑर्डिनेट आपका क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड. नीचे क्या है आपका सेकंड है. तो जब आप इसके अंदर का जो डिस्चार्ज निकालोगे, एरिया ऑफ दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ, व्हाट विल गिव द मीटर क्यूब पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय द सेकंड, it will give the volume. What is giving?
this is the volume only. Okay. So यहाँ पे आपका क्या है? This volume should be equal to the theoretical volume. Theoretical volume आपने निकाला है. So you can make the corrections in the rising limb after this. These are the fixed ordinate. जो आपके blue वाले हैं, these are the fixed ordinate. We can't change it. This has been worked out based on the CWC report. So margin is available only beyond this W50 का जो falling limb है, वहां से लेके 0 तक में ही margin आपके पास में है. ठीक है? This has been given in the CWC report. Corrections can be done only beyond this W50 falling limb to the TB only. Any other question? So summation of the ordinate जो आप निकाल रहे हो basically क्या है? This is the summation of these two ordinate multiply by the 1 hour. So it will ultimately give the total volume. So we are equating the volume here only. Any other question? So I will upload this Excel sheet in your course program. तो आप उसमें मटेरियल से आप इसको यूज कर सकते हो. Only have to modify this. Initially आपको एक बार modify करना है इन formulas को. बाकी depending on the आपका unit hydrograph का base क्या है, उसके हिसाब से you have to make the corrections. क्योंकि distribution वगैरह आपको निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको these values is to pick up from the CWC report. और duration आपका हो सकता है अलग आएगा, तो you have to make the appropriate corrections in your Excel sheet. ठीक है? इसको then आप readymade इसको यूज कर सकते हो. Once it has been, आपने एक अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बार अपने Excel sheet बना ली. Generally the one project is falling in the one particular hydrological zone, तो आपने एक बार Excel sheet बना लिया. That will be applicable to all the bridges. Generally ऐसा कम ही है कि generally एक प्रोजेक्ट के 2 या 3 hydrometeorical zone में आता है. Mostly the one project is falling in the one hydrometeorical zone. आपने synthetic आपको ब्रिज बनाना है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आपने क्या किया? hydrometeorical zone ने बोल दिया कि पूरा एक this is 26 सब जोन में आपने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है? Okay, sir. So during the period उन्होंने they are the suppose आपका जैसे गोदावरी की बात कर रहा हूँ. So गोदावरी is the major rivers. That's why it is the basin. जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करें. Yes, sir. 6-7 locations they have just established the stations where the record has been collected for the continuously. ठीक है? Yes, sir. They have recorded all these locations. All the record has been collected. Rainfall का भी collect किया. River में कितना discharge हो रहा है उसको collect किया. Yes, sir. यहाँ का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ उन्होंने अलग बनाया, यहाँ का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ अलग बनाया, यहाँ का यूनिट हाइड्रोग्राफ अलग होगा, यहाँ का अलग होगा. देन उन्होंने एक बेस्ट फिट निकाला कि तीनों सब इस पर्टिकुलर रीजन में क्या एप्लीकेबल हो सकता है. सो दैट इज बीन बेस्ट फिट हाइड्रोग्राफ हैज बीन बेस्ड ऑन दीस 5-6 हाइड्रोग्राफ्स. दे हैव कम आउट विद द बेस्ट फिट यूनिट हाइड्रोग्राफ दैट विल बी एप्लीकेबल कंप्लीट एरिया. ठीक है? दिस इज द कांसेप्ट ओनली देयर. रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रोग्राफ उसमें जो फ्लड वगैरह सब चीजों की बात कर रहे हो, that everything has been taken care in these hydrographs. Physical characteristics for design discharge calculations. These characteristics of the catchment area are required for the calculation of the design discharge, and the parameters which are to be calculated are catchment area in square kilometer, then length of the longest stream course from the source to the bridge site denoted by L in kilometers, the length of the main stream from a point opposite to the centroid of the catchment area to the site along the main stream denoted by LC, and height of the farthest point above the point of interest along the river denoted by H, and the nature of the soil. All these parameters are required for the purpose of calculation of the design discharge. For calculation of catchment area, we require the topo sheet. Appropriate topo sheet is to be taken. Topo sheets are made available by the Survey of India. Physical topo sheets are available. This topo sheet has the contour interval of 20 meter, and other features are also available on the topo sheet. The first of all, on the topo sheet we have to mark the alignment and the location of the bridge. The meaning of the location of
bridge and we have to mark on the topo sheet. After marking, the next task is to mark the ridge line, that is the watershed area. All the topo sheet has some district number. Number is given on the right hand top corner. Okay. And adjacent topo sheet can be find out in the bottom. There is a grid given for the 9 topo sheets. In the center is the number of this topo sheet, and the sheet which is on the left hand side, the number is given here. On the right hand side, number is given here. Similarly, for this number of topo sheet, the right side is this sheet will be, and on the left side will be given on that topo sheet. This is how to find out the relevant topo sheet. Second important thing in the topo sheet is the scale of the topo sheet. Scale of the topo sheet is always 1 in 50,000. The meaning of the 1 in 50,000 is, if I measure 1 centimeter on this topo sheet, it is equal to the 50,000 centimeter on the ground. It means 1 centimeter is equal to 0.5 kilometer. Is equal to 0.5 kilometer. Right. Abbreviation used in the topo sheet are also given in the tabular form, such as the marking of river, roads, other objects, other topographic objects are also given in the topo sheet. The other very important thing which is available, the information available from the topo sheet, is the contour. The contour interval on the topo sheet is 20 meter. Nowadays, digital topo sheet is also available where the contour interval can be made available. For the purpose of demonstration, I have taken the xerox of the relevant topo sheet. On this topo sheet, first of all, the alignment is to be marked. The railway line alignment has to be marked on the topo sheet like this. And the location of the bridge also to be marked on the topo sheet. The location of the bridge is available in terms of the latitude and longitude. So it is to be marked on the sheet. The next task is to mark the ridge line. Normally, all the river pattern is like the root pattern. The small stream come together and they fall in a main stream, and then the main stream comes to the bridge side. There may be different network of the streams coming to a single bridge. So the task is find out the area from which the water is coming to the bridge in subject, which is under the consideration. So how to mark the ridge line? I will be searching for the intermediate point of the two streams which are flowing in the different direction. So I mark the approximately middle path of the two streams running in different direction. So in this way, I am able to locate the ridge line within which the water is coming to my bridge. So now I am following the ridge line. So ridge will be going something like this and covering all the rivers, streams and tributaries from where the water is coming to my bridge side. In this way, I will be marking the line, the ridge line, and from the other side also, I will be going something like this and marking the ridge line so that I am able to calculate the area from where the water is coming to my site. So this is the area which I have marked as a ridge line. After doing a little bit of practice, one will be able to mark the ridge line very specifically. For the purpose of calculation of the catchment area, we have already taken the copy of the topo sheet. We have marked the bridge location based on the latitude and longitude and marked the catchment boundaries, that is the watershed line following the ridge line. And now next task is to calculate the area. For purpose of the calculation of the area, this irregular shape is to be transferred on a graph, centimeter graph, 1 centimeter by 1 centimeter, and then we can calculate the area very accurately. So after tracing this irregular area on the graph sheet, either we can count the squares or making the big rectangles or small rectangles, we can calculate the area. And that area will be in square centimeter, which has to be converted by the scale. And scale is 1 centimeter. I have taken a
graph sheet of centimeter scale, then pin up the topo sheet with the graph sheet for the purpose of transferring the irregular shape on the graph sheet. Putting the carbon in between, then I can transfer this irregular shape in the tool. So now, first I will be marking the alignment, the bridge location, and then tracing the irregular catchment area. Simultaneously, one more thing is required, length of the longest stream. So here on this sheet only, I will be marking the different stream flowing to the bridge side, and then I will be measuring the length so that I can find out which is the longest distance from where the water is coming. So making the different stream darker, I can make out which is the farthest point from where the water is coming. These are the main streams which are coming to the bridge side. Now I will measure with the help of a thick thread what is the length of the longest stream. So spreading the thread along with the curvilinear path of the stream, I can calculate the length of the different stream coming to the bridge side. So now this is the length. I will measure the length with a scale. With a scale, and the length for this stream is 23.5 centimeter. So again, keeping in view the scale, I will be converting this length. Similarly, I will measure the length of the another stream also and find out which one is the longest stream. Now the next task is to find out the area and the CG of this irregular shape. So to find out the area, I will take out the shape on the graph sheet, and now either I can count the full squares, something like this, 1, 2, 3, 4, 5, and half can be taken as 1, or the better way, I can mark a big rectangle on the topo sheet available within the area, which is a full rectangle, and the smaller rectangles also. Measuring the length of these rectangles, I can calculate the area and put together summation of all will be the area of this catchment. Similarly, length of the stream which we have already measured, I require the point against the centroid of this area. So to calculate the centroid of this area, again I will be taking a hard card sheet over which I will be transferring this shape. To find out the CG, I will be taking the irregular shape on the hard card sheet. So by cutting this shape regularly as per the marking,
shape on the sheet. And now the next task is to find out the CG of this. For finding out the CG, I require a plumb bob and a hanging arrangement. To find out the CG, I have made a point from where the irregular area can be hung, and I have already marked the plumb line on the table. So now this is done with. Now I will be hanging this sheet from the same point, and find out and then connect and then mark the line over the sheet, plumb line over the sheet. Similarly, I will hang the same from another corner from the same point. The hanging point remains the same, and then again find out the plumb line on this. So the intersection of these two lines is the CG of this area, and now this CG is to be transferred on the catchment area, which is already marked on the graph sheet. Now I will be transferring this CG on the irregular area. So I have marked the CG on the irregular area, and my next task is to find out the length of the stream against the centroid. So using an arc, I will marking this. Say this is my longest stream, so I will be marking the point opposite to this centroid. So this is the point up to which the LC is to be measured. Again, using a thread in the similar manner, I will be marking. We have already calculated the catchment area, and for other calculation, say length of the longest stream, follow the main stream, then measure by thread, we have already done. Then length of the longest stream opposite the point. Okay, find the CG of the catchment area by the manner described. Cut a sheet in the shape of the catchment area, hang the sheet from a point and mark a vertical line. Hang the sheet from another point and mark a vertical line. Intersection of point of these lines is the CG of the catchment area, and then this CG is to be transferred on the topo sheet. Okay. Next task is to calculate the statical stream slope also. So I already know the bed level of the bridge. I can find out the level at the start of the longest stream, which is available from the contour interval. Next thing, I will mark the different contours where they are crossing my stream. For example, this is the contour of 400 meter. This contour is crossing here. Next contour is of 420 meter, which is crossing my stream here. So I will write here 400. This is 420. Similarly, I will be going up and marking all the contours for which I know the value and they are crossing my stream. The next task is to calculate the length from the bridge side to the point where the contour is crossing. I mean, I want a length in between the level in between the 2 points where the level is 4 on the stream, where the level is 400 and the bridge side. Another where the level is 420 and the bridge side. I will tabulate all these things for the purpose of calculation of the statical slope of the stream. In all these exercises, we have calculated area A in square kilometer, length of the longest stream as 14.3 kilometer, length of the main stream from a point in unity. For the purpose of calculation of statical slope of the stream, I have already marked the point where the contours are cutting my stream, and I have calculated the distance also. So all those data are to be tabulated in this format.
So these are the distances from the bridge side. These are the label where the label of the different point where the contour are cutting. Naturally, there will be the contour interval only. Then the length of the segment, I have calculated this minus this. So difference between these are taken as the length of the segment. Then height of the datum is also to be calculated. We know this level. So by difference, I have calculated the height of the datum above the bridge level. Then to calculate as the procedure given in the flood reports, I calculate with the formula taking the sigma this and divided by L square, or the manner in which it is given in the flood reports, I calculate the equated slope. Any drop of the water इस साइड होगा इधर आएगा, इसके पीछे वाला it will go on the back side. Yes sir. Suppose अगर आपको you want to draw the ridge line here. Yes sir. Okay. So basically आपका ridge line क्या होगा? This is the ridge line. Okay sir. Okay sir. Okay. Yes sir. Any drop of the water beyond this will go this side and anything will come this side. Okay sir. Sir. ठीक है. So this is the way. And दूसरा क्या जो topo sheet में दिया हुआ है, topo वहाँ पे stream भी mark करते हैं उसमें. Yes sir. Okay, this is the for the belly के लिए है. This is the V shape contour अगर आपके हैं. These are contour lines marking the ridge line. Okay Front लेते हैं, that is the ridge line. Okay sir, बिल्कुल right sir. Ridge line, ठीक है? Okay sir. Yes sir. And आप जैसे इसको depict करें, इसके contours हैं. This is the things. Yes sir. Okay? So this is the flowing of the river. Okay sir. And this is the valley. तो आपकी ridge line क्या होगा? Divide यहाँ से ridge line हो गया आपकी. This is the ridge line आपकी divide हो गई. Okay sir. Everything will become this side. और इसके beyond कोई भी चीज होगी वो this will go on the this side only. हाँ वो flow हो जाएगा. So this is the things how to mark the ridge line. Okay. Okay. Yes sir. Yes sir. और जनरली जो टोपो शीट में होता है इस तरह की आपकी फ्लो की चैनल्स भी उसमें मार्क करते हैं ब्लू कलर में. Yes sir. Yes sir. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी चैनल इज बेसिकली दैट इज द रिज लाइन. Yes sir. Okay sir. Sir. This is the ridge line. Then the flow, another stream is starting from this side, another stream is starting from this side. Sir. Okay. So आपको इस stream से पता चल जाता है that is starting point of the stream marking on the topo sheet, that is the ridge line. Yes sir. Yes sir. Okay. क्या होता है सर, कभी-कभी गलत रीज मार्क डिसाइड करने से वो क्या है जो कैचमेंट है वो प्रॉपर नहीं आता और बाद में क्या है डिजाइन भी इम्प्रॉपर हो जाती है. बहुत बार ऐसा देखने भी गया सर. तो रीज लाइन जब तक हम क्लियरली समझेंगे सर. Yeah, definitely. That suppose nowadays most of the work is being done in the consultant, but through the consultant. But you must be aware of. Yes sir. किया कि नहीं किया है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ में जो सर ने बताया है, पैरामीटर ऑलरेडी सिलेक्ट किया कि नहीं किया, that is to be required to be cross checked by the executives. Sir. It may not be required directly to be done by you, but it is required. Yes. How can you check it? Whatever has been submitted by the consultant. So you must cross check. Sir. You must have the knowledge for about these things. Yes sir. Yes sir. This is the marking of the line. जैसे आपको एक stream भी दिखती है. These are the two streams. और वहाँ पे contour generally contours are taking the sharp turns. आप देखोगे. Yes sir. Sir. ठीक है. This is the contours जहाँ पे turn लेते हैं. That is the ridge line. Okay sir. Sir. आज के डेट में कल वो बताएंगे आपको मिस्टर कुशवाहा. भुवन से आप डायरेक्टली भुवन में आप अगर अपना मार्क करते हो कैचमेंट एरिया, जी सर, तो आपको पूरी प्रॉपर्टी दे देता है. ओके सर. एंड हाउ टू मार्क ऑन द भुवन, he will that will be presented by Mr. Kushwaha tomorrow. Okay सर. ये मैनुअल मेथड सर, मैनुअल मेथड कैचमेंट का बहुत अच्छा लगा सर. आज के कंप्यूटर टाइम में हम लोग मैनुअली कुछ कर सकते हैं. दैट इज अ गुड थिंग. ओके. जनरली अभी हम लोग आजकल थ्रू सॉफ्टवेयर्स है इसके थ्रू कर रहे हैं. जनरली इसके पहले तो आज 5-6 years बैक एवरीबॉडी इज डूइंग इन द मैनुअल सिस्टम ओनली.